जी जनाब, लास्ट लेक्चर में हमने ये ग्राफ देखा था और इस ग्राफ की बुनियाद पे हमने कुछ डिसीजंस लेने थे। बेसिकली हमने शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी फ्रॉम अ गिवन नोड टू अनदर नोड। देखें, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स मौजूद हैं। आप इंशाल्लाह जब आई एम अज्यूमिंग कि मैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की क्लास के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिसको मैं करंटली पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। अम, तो थर्ड सेमेस्टर है वो। अभी आप लोगों ने एल्गोरिदम एनालिसिस का कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, तो आगे जब इंशाल्लाह मे बी पांचवें सेमेस्टर में होपफुली जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप एल्गोरिदम एनालिसिस का कोर्स पढ़ेंगे जिसमें आप शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम प्रॉबेबली ग्राफ थ्योरी के अंदर आप उसको तफसील से पढ़ेंगे होपफुली। तो इसके काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं कि ग्राफ गिवन हो तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए ग्राफ किस तरह का है और प्रॉब्लम एट हैंड या उसकी कंस्ट्रेंट्स किस तरह की हैं, उसके लिहाज से मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं। एक एल्गोरिदम जो हम डिस्कस करेंगे वो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है, बेलमैन फोर्ड्स एल्गोरिदम। और ये एल्गोरिदम बेसिकली जिस इक्वेशन पे बेस करता है वो इक्वेशन है बेलमैन्स इक्वेशन। मैं भी डिस्क्राइब करूंगा बेलमैन इक्वेशंस क्या होती है, या कई फॉर्म्स में भी लिखी जा सकती है, एक फॉर्म में बताऊंगा आपको। और ये बेलमैन इक्वेशन इतनी सिंपल है और इतनी एलिगेंट है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, वंस यू गेट द आइडिया, द इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट वेरी हार्ड। ना सिर्फ ये, यही इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली विद अ वेरी लिटिल ट्वीक becomes the implementation of Markov decision process, which I'm telling you again and again is the foundation of reinforcement learning. And reinforcement learning is the how should I say? I mean, it's the most trending branch of artificial intelligence these days. So without further delay, let's dive in to see what is Bellman's equation. So Bellman's equation, uh, a Bellman's equation is an equation of this particular form. So, for example, Bellman equation says, um, um, so V, um, let's say K of S. Let me first write it in this context, and then we will see कि इस context में लिखने के बाद इसका मजीद. This is basically the edge cost from S to S dash plus V K minus 1 S dash. अब ये V क्या है, ये K क्या है, आई मीन ये सारी चीजें क्या हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। V हम डिफाइन करेंगे VK ऑफ S, ये हम डिफाइन करेंगे दैट इज समथिंग, और इसको हम डिफाइन करेंगे एज अ लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम S टू Z। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि Z हमने फिक्स कर दिया डेस्टिनेशन, कि हम जहां पे भी हैं हमने Z पे पहुंचना है, सो Z इज द डेस्टिनेशन। यानी ये प्रॉब्लम ये है कि Z is a fixed destination and wherever you are you want to reach Z, so we need not to mention Z because Z is fixed. Wherever you are you want to reach Z, या कोई भी नोड जिसको आप टारगेट नोड फिक्स कर ले, हमने इस एग्जांपल में लेट्स से Z फिक्स कर लिया। so length of a shortest path from S to Z with no more than K edges, no more than K edges, यानी लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ मींस जैसे हमने इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट टाइम किया था, ये एक शॉर्टेस्ट, ये एक पाथ है एक्स से वाई, फिर वाई से डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से जी, और इस पाथ की जो टोटल लेंथ है दैट इज एक्चुअली the sum of all the edges that are traversed. In this case, the total length is 2. पता नहीं ये शॉर्टेस्ट पाथ है या नहीं है, लेकिन पाथ की लेंथ क्या होगी,
जो कि उस पाथ में आने वाले जितने भी एजेस हैं उनके वेट्स का सम, दैट्स द लेंथ ऑफ द पाथ। तो इन दैट केस अगर हम यहाँ पे देखें तो वी के क्या वी के एस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पहली बात तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये पाथ शॉर्टेस्ट होगा, इससे बेहतर कोई पाथ नहीं है। जो एस टू जी होगा, लेकिन ये वो पाथ होगा जिसमें नंबर ऑफ एजेस के से ज्यादा नहीं है। अब के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, के की वैल्यू 1 भी हो सकती है, के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। ये ई क्या है? E of S to S dash. This is the edge weight between S to S dash. For example, अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे what is E X Y? This is basically the weight of the edge from X to Y, which is this 4. So in this case, it is 4. So this is simply the edge weight between X and Y. और अगर एक्स से वाई के दरमियान एज ना होता तो एज वेट को हम इन्फिनिटी कहते हैं, यानी कॉस्ट को इनफाइनाइट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर आप यहीं पे देखें एक्स से डब्ल्यू के दरमियान कोई एज नहीं है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ व्हाट इज द कॉस्ट और द एज वेट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू फ्रॉम एक्स टू डब्ल्यू, I can write that as infinity because there is no edge. You cannot move there. Or if you really want to move, the cost is infinity. Okay, so this vk basically is the length of the shortest path from S to Z with no more than k edges. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जो अभी हमने ग्राफ देखा है उसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वी 2x, सो ये बेसिकली है कि अगर आपको सिर्फ दो एजेस अलाउड हों, सिर्फ दो एजेस अलाउड हों, दो से ज्यादा एजेस आपको अलाउड ही नहीं है बिलफर्स, क्योंकि आपने हमने कह दिया कि के की वैल्यू 2 है। अगर दो एजेस से ज्यादा अलाउड नहीं है और x से आप z पे जाना चाहते हैं, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ? In this particular example, we can see that if we are allowed only two edges, no more than two edges, then we can go from x to y and then y to z, and that path length is 6. Or we can go from x to p and then p to z, that is also a path from x to z consisting of two edges. So अगर मैं x से z के दरमियान x से z पे जाने वाले वो तमाम पाथ से इकट्ठे करूं जिसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस मैक्सिमम दो हैं, दो से ज्यादा नहीं है, उनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसकी लेंथ इज बेसिकली this value, and in this particular case it is 6 because we are not allowing more than two edges. अगर हम दो से ज्यादा एजेस अलाउ कर दें, बिलफर्स v3x अगर हम ये अलाउ कर दें, तो अभी हमने देखा है कि v3x अगर हम तीन एजेस अलाउ कर दें, तो अभी हमने देखा है कि तीन एजेस के केस में द शॉर्टेस्ट पाथ कुड बी ऑफ लेंथ, इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ लेंथ 2। मुझे शायद ये फौरी तौर पे कहना नहीं चाहिए कि दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि मुझे सारे थ्री थ्री लेंथ के पाथ्स पहले बनाने चाहिए जिसमें तीन एजेस हों, सारे के सारे बना लूं और फिर देखूं कि उन तीन एजेस वालों में से या मैक्सिमम तीन एजेस वालों में से, यानी मैं वन एज के सारे पाथ बना लूं, टू एजेस पे मुश्तमिल सारे पाथ फ्रॉम एक्स टू जी बना लूं और थ्री एजेस पे मुश्तमिल सारे पाथ फ्रॉम एक्स टू जी बना लूं और उसमें देखूं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है। दैट लेंथ इज बेसिकली दिस वैल्यू। In this case I think it is 2 because I have made this example myself. I know it is 2, but I mean you should in the to find this out, to find this number out, you have to go through all the edges, all the paths, and then find out the minimum one. Also, one other thing, if you can notice, V1x, I mean, the shortest path from x to z when you are only allowed to go, when you are only allowed to have one edge, that is basically, there is no single edge that leads from x to z. So the shortest path length consisting of only one edge from x to z is infinity. And same is for 0. So the shortest path length from x to z when no edge is allowed, that is also infinity. So this v0 is infinity for all the nodes when the node is either x, y, p, or w.
बिकॉज अगर आपको अलाउड ही नहीं है, एक एज भी ट्रेवर्स करना अलाउड नहीं है, तो जिस जगह पे आप खड़े हैं वहां से शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगी? इन्फिनिटी। आपको अलाउड ही नहीं है। बट V0Z, बिकॉज Z इज द डेस्टिनेशन नोड, अगर आप ऑलरेडी Z पे खड़े हैं और आपको कोई एज अलाउड नहीं है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ नाउ? इट इज जीरो। दैट्स इंपॉर्टेंट। दिस इज जीरो. um I still, I could still not completely define this equation very well. Um, I have defined some pieces of it, just defined it. I've not told you okay, how this leads to finding out the shortest path. But to retain the video length being not very large, let me stop this video and we will resume from here in the next video.